Hello, can you listen? Yes, sir, hearing. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. तर्जुमा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पूछते हैं कि खुदा की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को दो, और जो भलाई तुम करोगे खुदा उसको जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Thank you very much, sir. Today's webinar, and today's webinar, there is not only pathology people and the training people, so many others, professors of physiology, professor of microbiology, professor of biochemistry, and professors of anatomy. So many other people are also there. Basically, we are trying to make the bridge between the pathology and the clinician. That is why from the last so many weeks in the last year, Brigadier Ramer and me, we are doing continuous webinars. And thank you very much, Brigadier Rifat. Before starting this, I will introduce today's speaker. Brigadier Rifat, Brigadier Nuzat is a TM, Tara Imtiaz, Tamka Imtiaz from the military. She is MBBS, FCPS in hematology, and she did the CMT. She is known as a consultant pathologist, hematologist, ex-commandant Armed Forces Institute of Transfusion, and CEO Technology, technical consultant, Pakistan First Solutions, Rawalpindi. Thank you very much, Madam, for giving today's time, and inshallah, we'll continue for another 6 weeks. Another panelist is Brigadier, retired Brigadier now is Professor of Chemical Pathology. He is the writer of so many books, a large number of degrees, a large number of qualifications, a large number of publications. Professor Amir. Professor Amir is nowadays Professor of Pathology in Mirpur in Mahayuddin Medical College, Azad Kashmir. Thank you very much. And this webinar is in collaboration with the PMA, Pakistan Medical Association, Azad Jammu Kashmir Medical College, Muzaffarabad, Pakistan Association of Pathologists. Brigadier Nuzrat is the elect secretary and treasurer, and also collaboration of Women Medical College, Aptabad. Thank you very much. Now it is over to you, Brigadier Nuzrat. Assalamualaikum, dear participants, sir, host of the meeting, my panelist, Assalamualaikum. I must thank Professor Bukhari for the kind introduction, and in fact, his insistence and persistence who brought me on this forum, both as far as election of the PAP is concerned and this thing. I hope that we are able to, from the PAP platform, make some progress and contribute towards medical education and touch upon those topics which are actually form the basis, core basis of pathology. To me, the way the pathology is developing, मेरा ये ख्याल है कि कुछ अरसे बाद मेरी अपनी foreseeable future में ये लगता है कि जिस तरह boundaries fuzzy हो गई हैं total lab automation के साथ, इसी तरह
it is going to go back to the basics के, और वो basics क्या है कि जो clinician है, जिस तरह उनके हाथ में bronchoscope है और endoscope है और angioplasty और stenting है, interventions हैं, इसी तरह ये intervention भी bedside पे आ जाएगी, which is called laboratory. So laboratory science is going to have a paradigm shift और point of care testing इतने अच्छे हो जाएंगे और इतने miniature हो जाएंगे और इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि प्रॉबेबली जो पैथोलॉजी है वो उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट एक फॉर्म में नजर आएगी. तो क्या उस चीज के लिए दुनिया तो तैयारी कर रही है, हम भी तैयार हैं कि नहीं है, क्या इस ट्रांजिशन में क्या होना है, हमें इसके ऊपर एक्चुअली जरूर सोचना और बात करना चाहिए. Anyhow, so why I chose this topic of clinical utilization of laboratory testing, reason being that we know that before actually laboratory testing or laboratory or pathology की ये development हुई है कि where they have been able to analyze the analytes and the tissues and the body fluids. उससे पहले तो साइंस जो है वो डायग्नोसिस की जो है वो क्लिनिकल डोमेन में थी और ये एक लेटर डेवलपमेंट है. लेकिन this later development has overwhelmed so much and had created so much of a space of its own कि अब जो है वो 70% clinical decisions जो है वो dependent है laboratory information के ऊपर. और ये जो laboratory information की plethora of laboratory information है, अब dilemmas जो clinician के हैं वो ये हैं कि इस information content जो lab test में है उसको कैसे evaluate करना है एक individual patient के context में. And also how they should adopt a procedure to decide कि जी different tests जो हैं उनकी disease discrimination ability क्या है, or which we in other words we call it as a diagnostic accuracy of the test, so that they can best utilize these for management of the patient. और usually clinicians जो हैं they are somehow they're not knowledgeable, especially in our country. बाकी तो क्योंकि हमारा ये education का part भी नहीं है कि इन लेबोरेटरीज को जो इंफॉर्मेशन आ रही है और जो वैल्यूएशन करनी है और जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के बारे में उनको मालूम होना चाहिए. तो इट बिकम्स टू द लेबोरेटरियंस या लेबोरेटरी साइंस के लेबोरेटरी मेडिसिन के लोग जो हैं कि वो जो है वो इस कम्युनिकेट करें क्लिनिशियंस के साथ कि ये इसको कैसे जो है वो व्हाट इज डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, क्लिनिकल यूटिलाइजेशन टेस्ट कैसे होनी चाहिए ऑब्जेक्टिवली. सो इन ऑर्डर टू डू दैट कि लेबोरेटरी साइंस वाले अगर लीड लेते हैं इस काम को करने के लिए तो दे देमसेल्व्स नीड टू नो कि जी ये डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है क्या और लेबोरेटरी टेस्ट की यूटिलाइजेशन कैसे होनी चाहिए. तो इसके लिए ये वाला जो लेक्चर है ये उसका पहला पार्ट है, मैंने तशकील दिया है. उसका मकसद यही है कि लेट्स टॉक अबाउट दिस कि हाउ द क्लिनिशियंस शुड बी यूजिंग दिस प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द लैब. तो उसके लिए ये है कि अगर if you look at a hypothetical patient pathway, इसका overview I have shown here, where actually ideally अगर बहुत different tier का well organized healthcare system चल रहा हो, you have a primary care physicians and GPs which we call in our country, जहाँ पे patient usually reports with certain symptomatology. Then either the patient stays in the OPD or they in a hospital setting की जरूरत हो तो वो inpatient हो जाता है. इन पेशेंट के साथ उसको वहां पे मैनेजमेंट करके then he goes and discharge and get into outpatient and then goes back to a general physician or a primary physician or the general practitioner. इस pathway के दौरान you need a laboratory test are ordered, diagnostics are ordered based on the symptoms or diagnosis के लिए treatment optimization monitoring which goes back to the general practitioner. और अगर ये देखा जाए तो these all these stages involve the laboratory testing, and then this has a significant impact on the patient management. And not only there's a value of these laboratory tests in immediate context of this care pathway, but broadly in whole of the patient journey जो मैंने इधर outline की है, and sociological context. And if you take this context even at a larger level, so it should consider as a society as a whole. तो इस चीज को देखते हुए कि ये जो सारा का पेशेंट का एक जर्नी होता है और ये जो इम्पोर्टेंस है इसकी और इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है इतना ब्रॉड है, तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफाइंड ताकि हम उसको at the end of the lecture we can see whether we have achieved some of them. So the objective of this
lecture is to understand what are the clinical relevant performance characteristics of a test. There are other which are laboratory relevant clinical performance characteristic of a test, which we'll talk about that in later lectures. Then we understand the clinical approach towards the ordering these tests. We learn the principles and systematic approach to the clinical utilization of laboratory tests, create among pathologists an awareness to develop a clinical perspective of diagnostic testing. We are able to differentiate between diagnostic accuracy and analytical accuracy. Then we appreciate the laboratory science is a clinical tool and it has a risks and limitation as well. So why we want to learn these things is because we are signatory and we are, oath bearers of, doing no harm to the patient. And we also relate and agree and accept that the mandate of a physician in any capacity in any place is to help the patient achieve and maintain health and prevent the disease and disability. If you look at sometimes the diagnostic errors are world over believed to be lack of sufficient skills of an individual clinician. We also go about that. But actually, if you see it in broader context, they represent a quality of care patient safety problem, which is traceable to a complete breakdown in the whole healthcare and health education system. You can extrapolate this statement to our present scenario. It's not the individual. Individual is a part of a whole. So it is, if somebody lacks a sufficient skill in order to use this tool, then this represents some more systematic and wider problem. So what is the diagnostic? कैसे किसी patient की symptomatology या उसकी presentation के ऊपर जो है वो people would achieve certain, come to certain diagnosis. तो इस वाली slide को अगर देखें तो you can immediately see that this is what we call as a spot diagnosis. You just need a history and a brief examination which would lead to this diagnosis that is a herpes zoster. But then you have, and I mean, it's probably would not involve any laboratory testing except for a very certain goal which arises probably later than later than arriving at a diagnosis. So iske muqable mein, if you look at such a problem, clinical problem where old elderly man presents with a history of hypertension and his lost 10 kg and for recently in the last 4 months, and he has some certain symptoms, and you find out that there's no localizing symptom, and he does have a associated personal history which is significant. Since you are the general practitioner, you are looking at, you know the patient's context as well. So here, this is where you need a probabilistic approach to a clinical diagnosis rather than a spot diagnosis. Now let's move on to what is actually a probabilistic approach to a clinical diagnosis. So the probabilistic approach to the clinical problem starts with defining a clinical problem and formulating a hypothesis. Now, if you narrow it down and briefly call what is a clinical problem, it is something like this. The patient has come with a weight loss, कि मेरा वजन कम हो गया और मुझे भूख नहीं लगती. Now, what the clinician is going to do is to generate a core clinical hypothesis, which is what is called as a clinician's construction. It's an involuntary, some clinician is going to construct in such a way, it's saying that it is involuntary, So it's an involuntary weight loss with anorexia and no localizing sign in an elderly man. That is the generation of core clinical hypothesis in medical terminology by a clinician. And this is a core clinical hypothesis. So if you want to define further what is actually a core clinical hypothesis, what is the statement about? It is a single most plausible explanatory idea to structure all the data about a given patient in a brief, understandable, and a meaningful summary that can actually help us formulate a differential diagnosis. And only on the basis of this meaningful summary, we can form a rational and systematic decision-making and interventions. You can make, we can state many other examples. Now, clinicians are called upon to do it on every and each patient, and they should do it. But hardly you can see that this core clinical hypothesis is written on, outpatient or indoor patients seen by the clinician, hardly any.
So sometimes the pathologist himself or themselves are called upon, especially in the field of hematology, where you are more confronted with the patient. And in fact, the laboratory hematology cannot be done unless you are able to, see the patient and formulate the hypothesis just like any other clinician. I have stated one example like pallor with splenomegaly in child with family history of a blood disorder. Here you are able to, now have a statement and a basis, a rational one, on which basis you would formulate and go into a certain intervention. Laboratory की आप help लेंगे बड़ा focused तरीके से, बड़े systematic तरीके से, or probably in a sequential manner, rather than randomly, ordering and doing, which I'll show you what is that approach called as. And similarly, you can have. I think I would request the people who are attending here, the juniors one who are not in a probably or if they are in a situation जहाँ पे उनको बनाना पड़ता है, patient देखना पड़ता है किसी workup करने के लिए, even in the lab के ऊपर, and even if they are on the clinical side, to start practicing writing this core clinical hypothesis. When I used to teach mostly तो मैं transfusion medicine में रही हूँ, लेकिन hematology में भी, I used to ask my residents कि जी आपको ये एक plain problem आया, you come up with and write a core clinical hypothesis. And it was very difficult for them initially, but then they got the knack of it and they were able to do it. So core clinical hypothesis becomes the basis of dealing with the clinical scenarios and applying tests or applying the testing, which we call it. ये जो scenarios हमारे पास आएंगे, different scenarios, वो किस किस्म के scenarios हैं? When you have to diagnose a disease, here you are confronted with the issue कि जी जो information test से आ रही है वो powerful enough है to differentiate between those who are diseased and those who are not diseased. Or there can be a situation where you want to do a differential diagnosis and rule in and rule out a diagnosis with a variable confidence based on कि information content क्या है और उसकी test performance characteristic क्या है. Only on that basis you will be able to rule in and rule out certain diagnoses. Then the scenario could be a therapy when you have to select an intervention on a patient, and the intervention की selection जो है वो patient centered outcomes के साथ concern होना चाहिए, whether it is the functionality, the morbidity, mortality, or cost of the test. Or sometimes you need to ascertain the harms कि जी potentially harmful agent जो patient पे use करने चाह रहे हैं उसके लिए you might need some laboratory testing. Then prognostication, especially with the rapid developments of certain platforms in last 2 decades, like molecular and cytogenetics and HPLCs and all that, which actually help a lot in predicting the response, and more customization and more personalized treatment is coming. You need a laboratory information there to prognosticate, and then obviously monitoring of the disease for response assessment as well as tailoring the intervention. So these are those clinical scenarios on which people apply tests, but sometimes they're not aware that why they are applying this test, for what purpose. So the clinical scenario, if people consciously do it, so probably they can do a much focused testing and they are able to assess कि जी इस टेस्ट में से हमें ये information मिलेगी जिसको हम ऐसे use करेंगे. That is the whole point. So this art of constructing core clinical hypothesis, why I call it as an art, because it is an art and some based on certain, it has to do probably can, they have a, as I said, if they are able to construct a core clinical hypothesis, they'll be more focused. But what generally approach is seen is that all possibilistic list is in their mind, sometimes very vague, sometimes very random. And they start writing a list of tests without knowing what information is going to come from that. Whether it is and then there's a concept of this baseline investigation in indoor patients, which is that should be discouraged, but nevertheless, so they work best for the interest of the patient cost effectively if they have a probabilistic list. Sometimes the approach can start with a prognostic listing. If somebody is about to there's a useless to actually look at intention of curing the disease, then probably it is the lab information that is going to be obtained या laboratory को जो उन्होंने use करना है वो prognostic list के basis के ऊपर probably selection होगी. But for setups like us, I think I would propose कि जो pragmatic list होती है in a context of a patient, वो
ज़्यादा यूजफुल होगी पेशेंट के इंटरेस्ट के लिए, rather than a book picture academic sort of listing, because बहुत सारे लोग जो है वो हमारे यहाँ आउट ऑफ पॉकेट भी दे रहे होते हैं और अफोर्डेबिलिटी इज इशू. So ये जो art of constructing core clinical hypothesis है, this is comes with a practice, hard work, and practicing this art with, you know, zeal and enthusiasm. And this, if the novice starts doing it, probably they are going to reach expert level, where you are in awe of those people who intuitively they come up with a core clinical hypothesis, differential diagnosis, and you are the novice may be surprised, you know, how well they are doing it. It needs a lot of experience, it needs a lot of practice, and it is needs approach continuous throughout the career, that you are able to do it then that quickly and intuitively. So जो probabilistic diagnostic reasoning है, जिसके ऊपर consensus है, जिसकी roots जो हैं वो evidence based में है, and we say that probably it's a, हम शुरू से सुनते आए, and we believe, and I firmly believe that it is a science as well as art of probability. तो clinical assessment जो है, जो हमने बात की है patient की core clinical hypothesis, this is based on certain pre-test probabilities before certain diagnostics are applied on that. And the new information will generate a post-test probability. और ये जो post-test probability है, इसकी information कहाँ से आएगी? There can be different sources. There can be additional clinical examination. There can be laboratory source of that information. It can be imaging. And sometimes the source of information is just evolution of the disease. At one point in time, वो जो डिजीज है वो इतनी क्लियर नहीं होती, उसकी इंफॉर्मेशन इनफ नहीं होती है, और जैसे जैसे इवॉल्व करती है तो वो इंफॉर्मेशन आ जाती है. सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन you will have a post-test probability, and then the post-test probability will be compared and should be compared to a certain threshold, and that threshold I'll talk about later. That threshold can be for a diagnostic testing, for a treatment, for doing some other intervention. So the question may arise कि ये जो pre-test probabilities मैं बात कर रही हूँ, ये कैसे आपने pre-test probabilities कैसे बनती हैं? For example, आपने disease एक confront की, आपने उसके ऊपर एक hypothesis generate की, तो उस hypothesis की basis क्या है? उस hypothesis की basis, okay, for a long time people would say expert opinion, जैसे मैंने कहा कि जी I just know, लेकिन over the time इसके ऊपर जो है वो इसकी एक बेसिस, एक साइंटिफिक बेसिस है प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटीज बनाने की. जो आई जस्ट नो है वो मेमोरी और एक्सपीरियंस तो है और बहुत जगहों पे बहुत अच्छा काम भी करती है, बट इट इज लायबल टू बायस एंड रैंडम एरर्स, क्योंकि एक बंदा जो है वो सोच रहा है वो कोर क्लिनिकल हाइपोथेसिस मे नॉट बी सिमिलर टू द अनदर वन एंड इट्स प्रोन टू एरर्स. तो जो साइंटिफिक वे ऑफ कैलकुलेटिंग द प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटीज है वो ये है कि जी सेम क्लिनिकल प्रॉब्लम जो है वो उसकी को वर्कअप किया जाता है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की जाती है, और उसके एंड में देखा जाता है कि कौन से डिसऑर्डर्स जो है वो कंफर्म हुए हैं, और उन डिसऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसीज ले डाउन कर दी जाती है. तो दैट इज अ वन वे ऑफ हैविंग अ प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटीज. या ये है कि वंस द डायग्नोस्टिक वर्कअप उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, पेशेंट्स को सेग्रीगेट करके दूसरे डिफरेंट ग्रुप्स में, और देखा जाता है कि जी किसके ऊपर कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसकी यील्ड क्या है और वो किस डायग्नोसिस की तरफ लेके गया. बट नेवरदलेस उसको समराइज करके ये मतलब ये है कि you do have a scientific basis of coming to certain pre-test probabilities in addition to individual experience और expertise जो है. And that is why जो evidence based medicine है वो ये नहीं कहती कि जो individual expertise और उसकी जो opinion है वो बिल्कुल रद्दी है, उसको combine किया जाता है with certain evidence and science. अब when we say कि pre-test probabilities, core hypothesis and differential diagnosis जो है, उसका बाद जब कोई भी intervention apply की जाएगी, whether in the form of further clinical exam or laboratory or imaging or whatever, it should revise the pre-test probabilities and it should be able to rule in and rule out certain diagnoses. तो जो statistical measure है to which extent of the extent to which new piece of information revises the probabilities is obviously a scientific way, has to be done in a scientific way, and इसको जो आप
लेबोरेटरी के कॉन्टेक्स्ट में प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी को रिवाइज किया जाता है, वो इस इल्म के साथ किया जाता है कि इस टेस्ट की डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी क्या है। अगर उस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी उस टेस्ट की पता है तो फिर प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो रैशनली, ऑब्जेक्टिवली एंड सॉलिडली जो है वो हो सकती है। अगर वो उस टेस्ट के बारे में उसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी का नहीं पता तो प्रोबेबली फिर वो एक अंदाजा है, एक वेग आइडिया है, एक ग्रे एरिया है और उसके ऊपर तुक्के वाली बात है। So what the clinician needs to know about diagnostic accuracy of a laboratory test to better utilize laboratory science as a tool for any given patient. So that's a big realization. The clinician need to see laboratory as a tool of managing the patient, just like a bronchoscope and endoscope and other interventions. So the diagnostic accuracy is defined as the extent of agreement of a test result with the accurate patient diagnosis. And it is a function of diagnostic accuracy के objective जो statistical या जो based हैं certain mathematical, these are enumerated here. The sensitivity and specificity well known, most well known by most of the people, but we look into that कि ये जो core और principle और basis है, इसको different तरीका है apply करने का. How they are going to be applied, we look into. Then predictive values, odd ratios, likelihood ratios, and receiver operative curves. I'll not go into the statistical and mathematical part of these things because that is going to consume a lot of time and they may not be relevant and of interest to the people जो कि हमारे इस पे हैं. But we'll look into the concepts of the thing. क्योंकि इन concepts को अगर समझ आए तो जो उसकी elaboration है, जो उसके mathematical, statistical parts हैं, उसको वो किसी भी text से देखा जा सकता है और अपने interest के हिसाब से उसको apply किया जा सकता है. So as I said कि जी टेस्ट सिलेक्शन पाथवे जो बेटर आउटकम्स के लिए हैं और उसका बेसिस जो है वो एविडेंस बेस्ड है और उसके लिए एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कोर जो काम है वो कहते हैं कि हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चन. ठीक है, तो कोर क्लिनिकल हाइपोथेसिस बेसिकली क्वेश्चंस जनरेट करती है और उन क्वेश्चंस को आंसर करने के क्वेस्ट में पीपल डू आस्क टेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी. और जो टेस्टिंग है उसमें जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसमें से भी दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी ब्रॉट इन एंड सर्टेन उसको वैल्यू उसकी डिफरेंट होगी और वो जो वैल्यू है दैट इज आल्सो साइंटिफिकली वो एविडेंस बेस्ड लेबोरेटरी मेडिसिन के ऊपर बेस होगी तो उसके ऊपर से साउंड जो है वो चीज निकल रही होगी. और इस एविडेंस बेस्ड लेबोरेटरी मेडिसिन क्या क्वेश्चंस कहती है, वो कहती है कि जी क्या ये टेस्ट इज गुड इनफ और अगर ये प्रॉपर्ली यूज होगा तो विल इट इम्प्रूव पेशेंट्स आउटकम and is it worth investing in test and what are the risk if answers to above is negative. So ये वो है बेसिस जो जिसकी बेसिस के ऊपर लेबोरेटरी वालों के जो टेस्ट हैं उनको जो है वो एविडेंस बेस्ड बेस के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन कंटेंट को समझा जाता है और इस इंफॉर्मेशन कंटेंट को समझाया भी जाता है. तो जब इसकी बेसिस के ऊपर दोनों के दोनों जो है वो क्वेश्चन जो पोज करेंगे लेबोरेटरी में और लेबोरेटरी जो है इस शक्ल में जो है उसको सर्विस दे रही है तो फिर it is everybody's job, the clinician's job to know about it, it's our job to know about it, it's administrator's job to know it, it's laboratory manager's job to know it, it becomes everybody's job to know about this thing. So let's go and look at these parameters. So सबसे पहला पैरामीटर जो मैंने कहा most widely known is the sensitivity and specificity. So sensitivity of the test जो है that reflects the fraction of those who are diseased, which the test correctly predicts. So ये जो है इसको mathematical terms में जितने भी true positives हैं or divided by the true positives and false negative, because after all this denominator concerns all the diseased. तो ये जो है this is the fraction which are correctly predicted by the test. And what is the specificity is the test reflects the fraction of those who are without the disease whom the test correctly predicts. So here the denominator are those who are non-diseased. So that is truly जो negative दिए गए हैं वो जो truly predict किया है test ने कि they do not have the disease out of all those who have tested positive. So the true positives हमें पता है कि is a disease individual who are correctly classified by the test. False negative are disease individual who are misclassified by the test. True negatives are non-diseased patients who are correctly classified, and false positives are the non-disease individual misclassified by the test.
So sensitivity and specificity is always a bargain. Ideally, in ideal world, in a utopian world, we would like कोई भी test हो, उसकी 100% sensitivity or 100% specificity हो. But in a real life scenarios, that is never possible. It may become very, it can reach very near to 100%, but never 100%. अब ये जो बात है, some टेस्ट जो हैं, कुछ टेस्ट जो आप करवाते हैं लैब में से, लोग क्लिनिशियंस ऑर्डर करते हैं, they are dichotomous test, simply negative and positive results, reactive and non-reactive results, and which we call as a qualitative test. And in this, there's a single sensitivity and specificity pair जो कि एक ऐसे कट ऑफ की बेसिस के ऊपर जो है वो डेजिग्नेट कर दिया जाता है. जबकि कंटिन्यूस टेस्ट जो है, दे आर क्वांटिटेटिव टेस्ट, देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी पेयर्स, क्योंकि अगर आप कट ऑफ को चेंज कर लें तो आप फिर उसकी एक नई जो है वो पेयर जो है वो बन जाएगा ऑफ डिफरेंट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी. आई विल शो यू ग्राफिकली इन अ शॉर्ट व्हाइल. So if you have a high sensitivity test, so what does it mean? That means that you would have a few false negative tests. But few false negative tests would obviously mean lot of false positive tests. और हाई स्पेसिफिसिटी वाले टेस्ट का मतलब ये है कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव कम होंगे इसमें. तो जब फॉल्स पॉजिटिव कम होंगे तो आपके फिर जो है उसमें फॉल्स ट्रू जो फॉल्स नेगेटिव है वो भी ज्यादा होंगे. सो आइडियल डू नॉट एग्जिस्ट. सो एक चीज को दूसरे के ऊपर प्रेफर किया जाता है. तो उस काइंडली ये किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ये स्पीकर बंद कर दीजिए जिसमें बैकग्राउंड पे नॉइजेस आ रही हैं. So ideal do not exist. So one specificity or sensitivity जो है वो क्या उनमें से हमारे लिए. तैयबा इफ्तिखार अपना माइक बंद कर दें. तो आइडियल चूंकि नहीं होता और हमें बार्गेन करना पड़ता है, तो फिर ये डिपेंड करता है कि हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को चूज करते वक्त हम किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं. आई शो यू एग्जांपल के सेम कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की रिक्वायरमेंट है. सो cutoffs can be selected for high sensitivity, but it compromises specificity and vice versa. Now look at this test. हम अगर ब्लड डोनर स्क्रीनिंग करते हैं और BCHIV के लिए टेस्ट करते हैं, which is a dichotomous test, we give a result in form of reactive or non-reactive. So here we have a Gaussian distribution of those who are non-diseased or unaffected, and here we are the one who are diseased or affected. So you can see that वदीद आपके मोबाइल बंद कर दें, अपना माइक बंद कर दें. वदीद आपके शोर आ रहा है. वदीद, सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज काइंडली अपने माइक बंद कर दीजिए. प्रोफेसर बुखारी आप भी एज अ होस्ट इसको कर सकते हैं बंद इनका सबका. अच्छा जी, उसमें ये है कि इफ यू लुक एट दिस कट ऑफ, हमने SCO का कट ऑफ लेते हैं. दोज हु आर डूइंग एलाइजास एंड क्लाया और फेमिलियर के SCO अगर आप एक कट ऑफ लेते हैं, और ये जो है गासियन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की पॉपुलेशंस की डिजीज और नॉन डिजीज के, देयर इज ऑलवेज overlap of what? Overlap of value of the test. Now here we have selected a cutoff here, and now you can imagine कि अगर ये cutoff जो है वो यहाँ पे है, तो what is entails? It entails कि ये वाले जो टेस्ट हैं, ये वाले जो लोग हैं, this is the percentage who will turn false negative. They have the virus in, but they have the anti-HIV, but they have tested negative, and this we call as false negative. Here these are that is which is truly जो है वो negative जो declare किया. Now what if I move now here, if the setting is a blood transfusion setting, so what I am concerned is कि कम से कम false negative आए. ठीक है. So what I compromise is कि I say कि I need a very, very high sensitivity. I will compromise specificity. So I accept false positives, but I don't want to have any false negatives. तो वो जब sensitivity जो है वो बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, तो obviously false positive की अपना एक जो है वो मुलाजिम शाह बुखारी साहब भी मुजफ्फर कश्मीर बैठे. Hello. So what
what I do is compromised on कि जी मुझे प्रोडक्ट का लॉस हो सकता है ज्यादा हो, बट आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज सेंसिटिविटी, एंड दैट इज व्हाट WHO वांट्स कि 100% सेंसिटिविटी हो. नाउ if I was extending this test in a context of diagnostic testing, जहां पे किसी ने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है वो चाहता है कि वो एंटी HCV या एंटी HIV कोई क्लिनिशियन ऑर्डर करके उसको पेशेंट को ट्रीट करना है, तो व्हाट दे वुड वांट, they would want a very specific test because they are going to undertake an intervention. अब उसके ऊपर probably the cut-off limit उस सिनेरियो में may be little higher. और यहाँ पे क्या होगा कि आप फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना चाहते हैं बिकॉज यू आर गोइंग फॉर एन इंटरवेंशन, जबकि ब्लड बैंकिंग सिनेरियो में जो है आप इंटरवेंशन कंटेम्पलेट नहीं कर रहे, वहां पे आपका कंसर्न ये है कि किसी को डिजीज बिल्कुल ना जाए और कौन सा डोनर है वो ट्रूली नेगेटिव जो है वो जो उसमें हर हर थोड़ा सा भी अगर आती है चीज तो फॉल्स नेगेटिव हम प्रिवेंट करें. So you can see the scenario and context. That is why blood donor screening के context में हमेशा आपको false positive ज्यादा मिलते हैं, और false positive जब ज्यादा मिलते हैं तो उसको वर्कअप भी किया जाता है, उसकी फर्दर जो कंफर्मेशन की जाती है, और जो कंफर्मेशन की जाती है वो डेफिनेटली हाई स्पेसिफिसिटी के टेस्ट के साथ किया जाता है. What if I move the cut off still here? तो इस साइड पे और करेंगे तो आपको और ज्यादा जो है वो आपके कम हो जाएंगे फॉल्स नेगेटिव, और वो टेस्ट और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा. सो दैट इज हाउ यू हैव बार्गेन बिटवीन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, एंड योर द क्लिनिशियन नीड्स टू बी अवेयर कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये टेस्ट जो है ऑर्डर किया जा रहा है, और जो लेबोरेटरी वाले हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं. और सिलेक्शन जो हम बाद में बात करेंगे कि हमने किस क्या सेंसिटिविटी को प्रायोरिटी देनी है या स्पेसिफिसिटी को प्रायोरिटी देनी है. सो यही काम, यही प्रिंसिपल तकरीबन जो है वो यूज होता है रेफरेंस रेंजेस ऑफ पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने के लिए. सो देयर इज नो आइडियल वे जहां पे कि आप 100% अनअफेक्टेड पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सकें और टेस्ट उसको नॉन डिजीज डिक्लेयर कर सकें, और 100% जो डिजीज है उनको डिजीज डिक्लेयर कर सकें. सो देयर ऑलवेज इज गोइंग टू बी एन ओवरलैप. There will be diseased who will be classified as non-diseased, and there will be non-diseased who will be classified as diseased. So that is where the tests have their limitation, which the clinician needs to know and the laboratory people need to know. And they need to know कि जी किस टेस्ट में कितनी लिमिटेशन है उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की बेसिस के ऊपर, और उसके बाद जो है वो उसको किया जाए. That is where the clinical context is most important. इसीलिए आपने दुनिया के सारे टेस्ट जो लेबोरेटरीज लिखती हैं वो कहती हैं कि जी कोरिलेट विद द क्लिनिकल, कोरिलेट विद द क्लिनिकल. वी अज्यूम कि क्लिनिशियन ऑलरेडी कोरिलेट करके आपके पास भेज रहा है. ओके इसको अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें तो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी का एग्जांपल जो HIV स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर उसकी 96% स्पेसिफिसिटी जो है वो इतनी है तो 2 out of 1000 विल बी फॉल्स पॉजिटिव. अब जो इसमें कोई शक नहीं है कि लेबोरेटरी मेडिसिन में सिर्फ ये जो टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इज नॉट द आंसर टू एवरी report which doesn't fit the clinical scenario. Analytical errors does lead to higher false negative or false positive, and pathologists are responsible for that. But analytical limitation of the test जो है and effect of the epidemiology, which is the prevalence of the disease, are not an analytical accuracy issue, and clinicians need to be aware of that. कि ये जो inherent limitation है by virtue of the design of the test जो कि manufacturer ने बनाया है, and it is also a function of prevalence of the disease. ये जो है जो predictive values हैं, this is in the context of test which says कि जी true positives out of जो भी जितने भी total positives आ गए हैं, and true negative जो test है out of the total negative test. तो जो predictive value है, that is usually a function of sensitivity, specificity, as well as the prevalence of the disease. Now, how the prevalence of disease would affect, I show you example. ये काफी लंबा एग्जांपल मैंने इधर लिखा हुआ है, बट व्हाट इट सेज इज कि जी अगर HIV की प्रेवलेंस जो है वो यूएसए में CDC कहते हैं कि जी ये जो है ये इज अबाउट 3,304 इंडिविजुअल इन एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन. तो जो अगर आप वो वाला टेस्ट अप्लाई करें HIV का जिसकी 96% सेंसिटिविटी है, तो ये 3172 इंडिविजुअल जो है वो एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव होंगे.
और क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो जो हमने टेस्ट लगाया उसकी 99.8 है, तो वी एक्सपेक्ट के पर 1000 2 फॉल्स रिजल्ट्स आएंगे. सो 1993 इंडिविजुअल वुड हैव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट. ठीक है. तो जो प्रेडिक्टिव पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो ये है कि जो हमने कहा है कि जी टोटल ट्रू पॉजिटिव्स आउट ऑफ ऑल द पॉजिटिव्स, so that will combine the true positive as well as the जो false positive आ गए, which is 61%. so that ये इसमें individual जो है उसका there is a moderate chance of having a false positive result here. So additional testing would be necessary to separate true positive individual from false positive. तो ये population को हम extrapolate अगर करें, इस population को जिसकी prevalence की वजह से जो है वो आपका जो है वो predictive value जो है उसको affect हुई है, तो this is the same sort of thing कि अगर population जो है यही donor की population है, तो we should expect कि ये जो positive आए हैं उनमें से जो है वो chances हैं कि जी ये false positive result होगा. जितना प्रेवलेंस कम होगी उस डिजीज के उतने चांसेस जो हैं वो फॉल्स पॉजिटिविटी के ज्यादा होंगे. तो यहाँ पे क्या है कि जी यहाँ पे इसीलिए ब्लड डोनर्स टेस्टिंग सेटिंग में जो है वो ऑटोमेटिकली अगर वो डोनर कंफर्मेटरी टेस्टिंग करके वो डोनर को और रिकॉल करके उसको इन्फॉर्म करते हैं. ठीक है जी. एंड यूजुअली व्हाटएवर द मेथड इज टेकन. और यहाँ पे नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत हाई है क्योंकि ये बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है. तो यहाँ पे आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स जो आए हैं वो तकरीबन इतने जो हैं, इसमें से ये ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं और बाकी जो है वो फॉल्स उसके नेगेटिव परसेंटेज है. तो इसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू काफी हाई है. और उसकी वजह क्या हो सकती है कि जी अर्ली HIV इन्फेक्शन हो सकती है. एंड इस केस में फ्रीक्वेंट टेस्टिंग से हाई रिस्क इंडिविजुअल जो हैं वो उसको देखा जा सकता है. So that's how the predictive values are affected by the prevalence of the disease in there. And it is also a function of, as I said, prevalence as well as the sensitivity and specificity of the test. So interesting बात ये है कि most of the clinicians can actually achieve test की जो accuracy है more than, और combination जो sensitivity और specificity की अब 170 या उससे ऊपर जो है that is really useful. उससे नीचे जो है वो यहाँ पे है फ्लिपिंग अ कॉइन. ठीक है जी. आई मीन वन प्राइम एग्जांपल इज प्रॉब्ली ESR कि जो इसकी जो कॉम्बिनेशन है उसकी वो इज अराउंड लेस देन 140. बट स्टिल ऐसा टेस्ट जो है प्रॉब्ली इट शुड बी थ्रोन आउट बिकॉज उसकी अनलेस अ वेरी वेरी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो उसको देखा जाए. तो ये वाला जो है ये कॉम्बिनेशन सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिशियंस कैन अचीव just like this, So what's the odd ratio? I'll not dwell upon much on the odd ratio. Odd ratio जो है that is again a probability of presence of a specific disease divided by the probability of its absence. ठीक है जी. अगर आपने it's like ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बड़ा रेलेवेंट हो जाता है कि अगर प्रोस्टेट जो है वो एनलार्ज्ड है और उसकी इस एज का बंदा आ गया जो 65 या 70 है, तो क्या ऑड्स हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो जो है उसको इस टेस्ट के आने के बाद जो है वो CA प्रोस्टेट होगा. Now I'll dwell more on a likelihood ratios. This is a most underutilized parameter of diagnostic accuracy, which is actually quite useful. तो इसमें जो है likelihood ratios हैं क्या? It actually summarizes the information about a diagnostic test by combining the information of both the sensitivity and specificity. तो ये हमें क्या बताता है कि जी ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो क्या लाइकलीहुड है कि पेशेंट की डिजीज जो है उसकी प्रोबेबिलिटीज को रिवाइज कर देगा. ठीक है जी. तो इसके लिए भी पैरामीटर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट ही है और इट इज बोथ वेज पॉजिटिव लाइकलीहुड रेशियो एंड नेगेटिव लाइकलीहुड रेशियो. तो इसको जो है वो अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो सेंसिटिविटी ओवर 1 माइनस स्पेसिफिसिटी व्हिच इज ट्रू पॉजिटिव ओवर फॉल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइकलीहुड रेशियो इज 1 माइनस सेंसिटिविटी ओवर स्पेसिफिसिटी दैट इज फॉल्स नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव. इसको अगर 2x2 के टेबल के हिसाब से अगर आप इसको और तफसील से देखना चाहें तो मैं आपको ब्रीफली
ये तो बड़ा कन्वेंशनल तरीका है उसका प्लॉट करने का, बट इसी को अगर आगे लेके इसके साथ कोरिलेट करें तो आपको शायद बेहतर समझ आएगी कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है और डिजीज प्रेजेंट और एब्सेंट, विच यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस 2/2 टेबल। अच्छा, इसमें क्या है कि पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो में हम क्या कह रहे हैं कि जी 80% पीपल आर ट्रूली पॉजिटिव, डिजीज्ड हैं और पॉजिटिव हैं, और इनमें से जो है वो 6% जो है जो नॉन डिजीज्ड हैं और वो पॉजिटिव आ गए। तो दीज आर, इसको डिवाइड करें तो ये एक लाइक्लीहुड, पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो आ जाती है ये। और नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो क्या है? दोज हु वर disease was present and this is a false negative result over a true negative result। तो इसकी जो लाइक्लीहुड रेशियो कैलकुलेट होती है वो ये होती है 20/94 और 0.2/0.94, और ये 0.2 है नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियोज इसकी। तो इसको अगर आप लाइक्लीहुड रेशियोज को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, कुछ के लिए आपको कंप्यूटर की असिस्टेंस चाहिए क्लिनिशियंस को, इसलिए वो दे लीव इट एज अ बैड जॉब, और बट देयर अदर निमोनिक्स भी हैं अवेलेबल, अगर वो कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको देख सकता है। तो अगर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी पता है तो जिस तरह हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रही है तो इसकी किया जा सकता है, और अगर 2/2 नंबर से करना है तो इस तरह किया जा सकता है, और अगर सिंपली जो है मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई करना मसला है तो सिंपलेस्ट वे जो है वो ये वाला है जिस तरह हमने यहाँ पे किया। सो यू कैन सी कि ये जो है लाइक्लीहुड रेशियोज जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं। और लाइक्लीहुड रेशियो का फायदा क्या है? ये बड़ा क्विक तरीका है और बड़ा प्रॉपर तरीका है एक्चुअली पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटीज को देखने का। ठीक है जी, क्योंकि हमने बात की कि आपने कोर हाइपोथेसिस जो है उसके ऊपर आपने प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटीज बनाई। प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटीज का तरीकाकार क्या है वो हमने देखा कि साइंटिफिकली अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट्स हैं तो भी ठीक है कि जी वो हमारे सेटअप में या किसी और सेटअप में क्लिनिकली जो है वो समझते हैं कि जी हमें पता है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी है। बट देन आफ्टर एन इंटरवेंशन पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या आई? ठीक है, उसके लिए लोगों ने नोमोग्राम्स भी बना दिए। तो वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पिछला एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है कि पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो जो है वो हमने 13 की। तो इफ यू कैन सी कि जी ये लाइक्लीहुड रेशियो, अगर आपकी प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन डिसऑर्डर आप समझते हैं कि देयर इज अ 25% चांस कि ये डिजीज है, तो उसके ऊपर टेस्ट लगाने से वो टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की बेसिस से पॉजिटिव लाइक्लीहुड रेशियो आई 13। तो आप यहाँ से उसको स्केल को रख के इसको एक्सट्रापोलेट करें तो आपको पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी और पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डिसऑर्डर आफ्टर अप्लाइंग अ टेस्ट केम आउट टू बी मोर देन 80%। तो इसमें जो है यू हैव प्रॉब्ली रूल्ड इन अ डायग्नोसिस। उसके मुकाबले में अगर वो 20% प्रोबेबिलिटी थी और उसके बाद जो है वो उसकी आपने कैलकुलेशन सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की बेसिस के ऊपर नेगेटिव लाइक्लीहुड रेशियो उसकी क्या है, तो वो जो आप देखें तो अगर उसकी 0.1 के करीब 0.2 के करीब आती है तो उसकी जो है वो पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिसऑर्डर जो है वो कितनी कम है। सो दैट्स हाउ यू आर एक्चुअली मैथमेटिकली यू कम टू कि जी पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटीज जो है वो क्या है और क्या पॉसिबिलिटी है कि इस डायग्नोसिस को आप रूल इन कर सकते हैं, यू रूल आउट कर सकते हैं। दैट इज फंक्शन ऑफ दिस थिंग। सो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी जो है वो अल्टीमेटली क्या चीज बनी? दैट इज हाउ वेल अ गिवन टेस्ट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिजीज एंड नॉन डिजीज इंडिविजुअल। तो ये जो है ये इस टेस्ट से को की इंफॉर्मेशन जो है वो लेबोरेटरी से जो निकलेगी दैट इज हाईली अफेक्टेड बाय द प्री एनालिटिकल एंड देन ऑब्वियसली एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर्स। तो प्री एनालिटिकल फैक्टर्स जो है वो 68% ऑफ द टाइम जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो यू कैन इमेजिन सच अ हाई परसेंटेज कि जो आपके टेस्ट की इंफॉर्मेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, एंड द क्लिनिशियन नीड्स टू नो अबाउट दैट। और इसी तरह पोस्ट एनालिटिकल जो है वो इतना है, एनालिटिकल किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर ओवरऑल आप सिनेरियो में देखें तो वो इतने हैं। नाउ एनालिटिकल एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द लैब टेस्ट refers to how well an instrument or method can measure the analyte of interest. That's the difference. Obviously जो diagnostic accuracy है वो divorce नहीं है कि ये in isolation में है। Analytical accuracy and performance of the lab test की basis के ऊपर ही diagnostic accuracy बनती है।
So the clinicians need to know कि जो analytical or the primary responsibility of the pathologist is कि analytical accuracy को वो ensure करे और वो reliability of the test को ensure करने के लिए analytical accuracy को ensure करना जरूरी है. Performance of the test को, laboratory management को, whatever is needed is to be done so that the information that goes out to the clinician is reliable. क्योंकि उस इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी तो पेशेंट जो है वो उसकी सेफ्टी इंश्योर हो सकेगी. अगर वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिसीजन भी रिलायबल नहीं है एंड इट इज लायबल टू बी अ रॉन्ग डिसीजन एंड इफ इट इज अ रॉन्ग डिसीजन तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ पेशेंट सेफ्टी इशू. सो दैट्स हाउ द लेबोरेटरी साइंस, बिकॉज 70% ऑफ द डिसीजंस आर बेस्ड ऑन लेबोरेटरी, बट एट द सेम टाइम ये जो है एनालिटिकल डोमेन में, यू कैन इमेजिन कि एनालिटिकल डोमेन में कितना कम आ रहा है. It's a pre-analytical and how that information is utilized, which is actually which falls in the domain of the clinician. So ये unless there is a complete communication and understanding, so कि जी pre-analyticals भी ठीक हो, post-analytical भी ठीक हो और laboratory वाले जो हैं वो analytical भी ठीक कर रहे हो, only then actually that will be a utilizable information for a sound decision. So we'll some other time again talk about it. Our pre-analyticals क्या चीज़ हैं? There's a consensus. 62% of the information coming from the laboratory is affected by the pre-analytical. 62% तक जो क्या किस किस्म के, there's plenty. We all know that. And similarly, inappropriate result and interpretation of the result. And analytical में कितना आ गया है? वो जो है वो आपका जो है वो अनरिकग्नाइज्ड जो है वो आपके एनालिटिकल जो डोमेन में आते हैं वो कम है, लेकिन उनको भी नेवरदलेस होना नहीं चाहिए. अच्छा, स्ट्रक्चर जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के जो चीजें हैं वो टेस्ट अगर उसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को किसी ने एस्टैब्लिश करना है तो उसका क्या तरीकाकार है? तो उसका तरीकाकार जो एविडेंस बेस्ड है वो ये है कि ब्रॉडली मैंने प्रिंसिपल ले किया है कि पेशेंट एक सस्पेक्टेड डिजीज का, उसके ऊपर गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट लगाया जाता है और उसके बाद टेस्ट अंडर कंसिडरेशन जो आपका एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है वो लगाया जाता है और फिर उस पर क्लासीफाई कर लिया जाता है कि डिजीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है एंड देन यू कंपेयर इट विद द गोल्ड स्टैंडर्ड. हाउएवर ये जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के टेस्ट हैं ये रैंडमली जो है करने का, उसकी जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है उसका कोई फायदा नहीं है. और इसका जो है इस चीज के ऊपर चूंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे तो एक कंसेंसस आया कि जी स्टार्ट स्टेटमेंट 2015 गाइडलाइन कि आपने डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी की स्टडीज को कैसे जो है वो रिपोर्ट करना है और उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो असेंशियल है. देयर इज रिटन हियर, दिस इज ओपन सोर्स, एनीबॉडी कैन नो दैट. कोई भी whoever wants to undertake the study of diagnostic accuracy should consult these guidelines and comply with it so that कि वो उसको diagnostic accuracy को सही तरीके से वो रिसर्च कर सकें और उसको रिलायबल तरीके से रिपोर्ट कर सकें और उसकी कोई वैल्यू हो. So this was so far हमारा जो है ना, this is I say कि जी टिप ऑफ द आइसबर्ग है और एक्चुअली जो है वो हम pre-test or post-test probabilities calculate post-test probability once somebody is aware कि जी टेस्ट में से इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी क्या है और उसके बाद उसको यूज करना है. once they have that information has to be now applied to the patient. Applied कैसे करना है पेशेंट के ऊपर कि जी if it is a spot diagnosis nothing is to be done and diagnosis will be either included or excluded, as I highlighted in one case of herpes zoster. अगर आप समझते हैं क्लिनिशियन कि जी ये जो है ये this diagnosis has not been excluded, तो उसके लिए या डायग्नोसिस एस्टैब्लिश नहीं किया तो एक थ्रेशोल्ड आता है कि जिसके ऊपर आप कहते हैं टेस्ट ऑर्डर होने चाहिए क्योंकि डायग्नोसिस वाज अनसर्टेन एंड वी हैव टू टेस्ट फर्दर. सो उसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा टेस्ट अप्लाई किया गया है, उस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी क्या है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट किया गया है, the probability of the diagnosis will lie somewhere here. And until the confidence is there that probably the diagnosis is established beyond any doubt and now it is a treatment threshold, then treatment threshold के पास पहुंच के diagnostic के जो टेस्ट हैं उनको लगाने का कोई फायदा नहीं है. Then it has to be intervention. हाँ, उस intervention treatment को institute करने के लिए अगर कोई चीज required है
तो फिर उसको लेबोरेटरी से अगर हेल्प चाहिए तो वो किया जाए. Otherwise, the treatment is instituted, and then the laboratory would be used probably for monitoring of the disease and establishing कि harm तो नहीं हो रहा उस treatment से. So this is जो है वो जो आपकी post test probability and thresholds हैं. These thresholds are based on the properties of the test, the prognosis of the disease, and probably the nature of the disease. अब जो post analytical paradigm के ऊपर देखें, majority of the test simply generate information. The information not necessarily always translate into a health benefit and health improvement or changes the outcomes. और वो outcomes कौन से होने चाहिए? They should be patient centered. That means the same thing that I said at the beginning, preventing and restoring and maintaining health. So that is also an important lesson. Plethora of information generated from the laboratory, if not utilizable, if not systematic, if is not with the awareness and consciousness, it does not generate a health benefit or improve the outcomes. हम अपने setup के dilemmas को तो किसी और वक्त में छेड़ेंगे, which we all know why this plethora of information is obtained from the laboratory. There's a lot of conflicts, but अगर पेशेंट के साथ किसी ने सिंसेरिटी के साथ काम करना है तो ये जो है इससे जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी टारगेटेड लेनी चाहिए, कॉन्शियसनेस के साथ लेनी चाहिए, उसके पैरामीटर्स की अवेयरनेस के साथ लेना चाहिए, और उसके बाद पेशेंट और डिफाइंड या पेशेंट ओरिएंटेड या पेशेंट के हिसाब से जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसको ड्राइव करना चाहिए उसमें से. So it is that improvement in health counts from the diagnostic outcomes from diagnostic testing will be generated by the way the test results are used to guide the diagnosis and downstream management. चाहे वो decision to initiate, modify, stop or withhold the treatment. It is, they have at least documented, and they say that waste and overuse are widespread and affecting both the quality of care and up to 30,000 deaths annually from overuse of the test and cost to the healthcare. Because overuse का मतलब ये है कि the information obtained may be a wrong information or maybe it is applied in a wrong way, and then it leads to a patient safety issues. So इसीलिए उन्होंने choosing wisely का एक initiative लिया हुआ है जिसमें general recommendation vis-a-vis laboratory क्या है. These are few specifics which you can benchmark against the practice that happen in the country. So do not order repeated laboratory tests for patients who are transferred from emergency department and who already have a laboratory test within a reference range available from some other hospital and source. Do not order screening, which is so common, baseline, especially with uncomplicated diseases which are suspected clinically to be, viral syndromes. Regular testing की कोई गुंजाइश नहीं है. It should be always in response to a clinical question, which is what the evidence-based, medicine teaches us as well. And repeating chemistries and CBC, अगर clinically stable है, doesn't make any sense. And baseline laboratory, जैसे मैंने कहा कि जिसमें low risk surgery है, जिसपे low risk surgery में CBC and baseline and whatnot, वो सारा coagulation studies, when even blood loss is not expected, is totally useless and waste of resources. So there's not simply कि जी fallout नहीं होता इसमें जो diagnostic testing कहते हैं, किस किस्म के fallout होते हैं. It creates sometimes confusion, creates a patient safety issues. Wrong decision, delays and harms. Then there's an emotional effect of a diagnostic test. It induces anxiety and stress associated with testing and waiting for the result. I have seen many patients who come up with and उनका total focus, उनकी जिंदगी तबाह हो गई है इस बात के ऊपर कि आज हमारा प्लेटलेट काउंट कितना है, सुबह कितना है, शाम कितना है, कल कितना था, परसों कितना है, and they just can't get out of that vicious cycle, and they have become emotional wrecks कि जी वो laboratory test treat हो रहे हैं और वो उनके हाथ में भी टूल आ जाता है, and they keep on doing that and they have so much of it's a sad situation. Then social effects, certainly stigmatization, social effect. आप बच्ची का हमारे करवा ले thalassemia trait, ठीक है, शादी से पहले, and then rest assured she'll not get married.
Cognitive effects, yes, maybe understanding about the diagnostic test, जब वो उसको understand नहीं कर पाते और उनको कोई समझा नहीं कर पाता और वो tool उनके हाथ में आ जाता है और वो Google वाला काम करते हैं, तो then it does have a lot of harm there as well. Yes, it can happen, behavioral effects. So with this, I think I come to end of my talk. Still, we believe we have to be hopeful about doing the right thing. Thank you. So that, Thank you, Brigadier Nuzhat. Really, it was really a brainstorming and baseline information that you provided. Brigadier Ahmed, can you give your comments as a panelist on this? How much time can I take? 5 to 7 minutes? सर आप उस्ताद हैं, आप जब समझे जितना समझे. I agree with you, Professor Bukhari. It's an excellent talk, very, very informative, and I really enjoyed Very every word. brainstorming and Very need of the brainstorming. day. Yes, and I enjoyed really every word of it because the topic is very close to my heart. In fact, this diagnostic accuracy studies, we teach our FCPS students as a curriculum. This is not a supernumerary thing. It is very much in the curriculum of chemical pathology. There is a full-fledged chapter in our textbook, and in my book also I have dedicated some pages to these studies. And we often ask in examination also in the form of MCQs, etc. And so it's very, very important. And secondly, I want to tell all the, not only the pathologists, all histopathologists, microbiologists, hematologists, chemical pathologists, and clinicians also, that these studies are very useful. If you carry out diagnostic accuracy of a clinical test, of a laboratory test, of a imaging, that will find a very nice place in an index journal. We have published several papers based on diagnostic accuracy because it has got great utility. Everyone want to know the specificity, sensitivity, etc. of a certain test. Just to add a few more things, in my experience, people, when they start these studies, diagnostic accuracy, they fail to find a proper gold standard. The gold standard is now called a reference standard and starred, as Brigadier Nuzhat has told us. So the proper reference selection of proper reference standard or gold standard is very, very important. For example, I give you an example of PSA. Whenever we talk of diagnostic accuracy, there is a lot of talk about PSA. Now, for PSA, the diagnostic, the gold standard is, of course, biopsy. So usually the gold standard is from histopathology, that is biopsy or excision biopsy or full-fledged biopsy. But why we then, when we have got a gold standard, why we go for an index test? This is another big question. Why we want to do another test? The main reason of doing an index test or evaluating, starting an index test is that the gold standard is either expensive or invasive, or it requires a lot of expertise. But again, there is an error in selecting those tests. For example, I found a paper, the author compared anti-CCP antibodies for rheumatic fever and the gold standard for RA factor. Now, this is very wrong because RA factor cannot be a gold standard. It has got very low specificity and sensitivity. And there is no fun of, if RA factor has got such a high specificity and sensitivity that it can be used as a gold standard, then why to introduce a more expensive test? So for the criteria of gold standard is that it should be more than 95% sensitivity and specificity established by another method. So this is a very important thing, that the gold standard selection. And once you select the gold standard, then if you are defining your false positive and true positive, then gold standard is always right. Your index test will be wrong. So you will designate true positive or false positive on the basis of gold standard, not on the basis of index test. Now you cannot challenge the gold standard.
मैं बड़ी एग्जांपल घर की दिया करता हूँ कि घर में आपको पता ही है किसका हुक्म चलता है, तो वो चाहे गलत है या सही है, आपने अब उसका हुक्म मानना है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड इज द सर घर में बेगम का हुक्म चलता है। हाँ बस आपको पता ही है ना। तो इसी तरह घर में वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और जब आपने एक दफ़ा गोल्ड स्टैंडर्ड डिजिग्नेट कर दिया फिर उसको चैलेंज नहीं करना, उसको सही मानना है, उसका जो टेस्ट है वही ट्रू पॉजिटिव होगा। Number two, another very important, if you have established the diagnostic accuracy of a disease, for example, disease A, and now you want to use the test for disease B, the same diagnostic accuracy statistics will not be used. This is very important. So you have to carry out the diagnostic accuracy study once again if you want to use the same test for another disease. So it is very disease specific. Thirdly, we do a mistake of mixing. For example, you are doing a diagnostic accuracy for PSA, and what you will do that you will take some patients of CA prostate, and against that you will take people do this mistake that they take absolutely normal people, for example, college students, for example, males of the hospital employees. That is wrong. You cannot use absolutely normal people as in diagnostic studies. You will use people with prostate problems, and then you will enter your data as either the biopsy is positive for CA or negative for CA. So if you are doing